How long did we study when we were preparing for JEE and how long are we doing it right now? तुम्हारी स्लीपिंग हैबिट कैसे थी जब तुम जेई दे रहे थे और वो अब कैसे दिखती हैं? How happy we were when we were preparing for JEE on a daily basis and how happy are we now? Are we? Might be, might not be. Depends on how we have utilized our 6 months of online college. अगर 6 महीने का टाइम तुम्हारी लाइफ में ऐसे डिक्रीमेंट ला सकता है तो यही 6 महीने का टाइम तुम्हारी लाइफ में कुछ अच्छा भी कर सकता है। खासकर ऐसे सिचुएशन में जब हम जानते हैं कि हमारे कोविड केसेस कितने ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं और हमारे वैक्सीनेशन की रफ्तार कैसी है, हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा कॉलेज और कितने महीने के लिए बंद रहने वाला है। Have you ever imagined what caused these drastic looking changes on a daily basis? I don't think we have ever done any drastic change on a single day. We just snoozed our alarm one more time. We have spent 10 minutes more scrolling Instagram every single day. We might have stopped putting alarms every single day. But these are small changes, right? What made so drastic changes in our life? अभी 1% चेंजेस बहुत ज़्यादा नोटेबल नहीं होते हैं। इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस तुम्हें पता भी नहीं चलेगा इन चेंजेस के बारे में, लेकिन इन द लॉन्गर रन ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं। If you get 1% better every single day, you end up being 37% better in that certain skill at the end of a year. And if you get worse 1% every single day, you end up to 0 in that skill. And unfortunately, this 1% compounding rule doesn't show its effects on a daily basis or on a short run. This makes it easy for the bad habits to roll in our life and the good habits to stay away from us. So this video is all about those 1% improvements or basically habits in the process of becoming the person that we really want to become. Broadly, this talks about the advantages of habits and processes over goals, the 4 factors that are responsible for making habits, and the 4 laws to make or break any habit. A lot of insights of this video are derived from the books Atomic Habits and The Power of Habits. And this video is basically the summary of all the key insights from the books and everything that is really essential to know about habit. Feel free to skip through the chapters below and also do consider checking out the description for some more awesome recommendations. So without further ado, let's begin. मोस्टली हैबिट्स जो होते हैं वो अननोटिस रह जाते हैं क्योंकि उनका बिहेवियर अंडर द हुड होता है और हमारा ऑब्जर्वेशन वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। बेसिकली हम हैबिट्स को इसलिए नोटिस नहीं करते क्योंकि एक सर्टेन थ्रेशोल्ड के पहले वो हमारी लाइफ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं कर पाते हैं और हमारा परफॉर्मेंस चेंज नहीं हो जाता, इधर गुड और बैड। अब जेम्स क्लियर की बुक एटॉमिक हैबिट्स में ऑथर ने एक कॉन्सेप्ट को यूज़ किया जिसका नाम है प्लेट्यू ऑफ लैटेंट पोटेंशियल। अब जैसे कि तुम इस ग्राफ में देख सकते हो, हम ये सोचते हैं कि हम किसी भी चीज़ को अगर प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें इम्प्रूवमेंट प्रैक्टिस के साथ लीनियरली वैरी करेगा। जैसे कि अगर हम दिन में 4 घंटे फ़ोन चलाते हैं तो वो एक ही दिन में हमारी लाइफ को मिजरेबल बना सकता है, या फिर अगर हम 4 घंटे कोडिंग कर लेते हैं एक दिन में तो फिर हम अपने आप को मार्क जकरबर्ग समझने लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। देखो इस ग्राफ में जो कि स्ट्रेट लाइन है वो हमारा पर्सपेक्टिव है। हम समझते हैं कि हमारे प्रैक्टिस हमारे परफॉर्मेंस के साथ लीनियरली वैरी करेगा, लेकिन जो कर्व्ड ग्राफ है वो रियल मैकेनिज्म है। देखो जिस पॉइंट पे हमारा पर्सपेक्टिव वाला ग्राफ रियल ग्राफ को कट कर रहा है उसके जस्ट पहले एक डिप आ रहा है। उस डिप को एटॉमिक हैबिट्स के ऑथर ने वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट कहा था क्योंकि उस टाइम पे हम एफर्ट डाल रहे होते हैं लेकिन फिर भी हमें अपनी लाइफ में कुछ नोटिसेबल चेंज नहीं दिख रहा होता है। बट जैसे ही वो पॉइंट पास होता है हम अपने लाइफ में मेजरेबल डिफरेंस देख पाते हैं। Now let's discuss why processes and habits are really more important than goals. Now the first problem with goals is winners and losers have the same goals. For example, me and my IITian friend both had the same goal to get into IIT, but he ended up in IIT and unfortunately or fortunately I am in NIT, but I'm happy. And if goals would have been so powerful, then I would have ended up in IIT. But this doesn't happen, right? Problem number 2. Achieving goal is just a momentary change. For example, if you bathe on every 4th day and bathing for you means just standing in front of the shower, and assume you have a party today where your crush is visiting. So you showered like hell and right now you are momentarily clean. But if you continue with the bad habit of bathing every 4th day, congratulations. After the 4th day, you are again stinking. Rather, if you would have a habit of bathing every single day, then you wouldn't have ended up with this problem. Problem number 3. Having a goal mindset restrict your happiness. भाई गोल माइंडसेट का होने का मतलब ये है कि तुम अपने दिमाग में ये सोचते हो कि तुम जिस टाइम वो गोल या उस माइलस्टोन को अचीव करोगे तुम उसके बाद हैप्पी होगे। बट ये अपने आप में ही गलत है क्योंकि तुम अगर प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर रहे हो, अगर तुम प्रोसेस में हैप्पी नहीं हो तो फिर प्रोबेबिलिटी कि तुम उस गोल या माइलस्टोन को अचीव करोगे अपने आप बहुत नीचे हो जाता है।
इन मोस्ट ऑफ द केसेस इम्पॉसिबल हो जाता है। और क्योंकि तुम प्रोसेस के अंदर हैप्पी नहीं हो तो तुम अपने आप को मोटिवेटेड फील नहीं करवा सकते हो, तो इससे गोल को अचीव करना और ज़्यादा हार्ड हो जाता है। अगर तुम्हें मोटिवेशन के बारे में और जानना है तो हमने इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दिया था जहाँ पे हमने मोटिवेशन के मैकेनिज्म को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तुम उसे जाके देख सकते हो। प्रॉब्लम नंबर 4, गोल्स आर एट ऑड विथ लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस। फॉर एग्जाम्पल, जिस टाइम हम अपने जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे थे तो उस टाइम हम सुबह जल्दी उठते थे और फिर अपने दिन में जितनी भी पढ़ाई की चीज़ें होती थी उसे करते थे ताकि हम अपने आप को सेटिस्फाइड फील करवा सके। ये सब सिर्फ एक गोल के लिए था ताकि हम एक अच्छे कॉलेज में पहुंच पाए। बट वंस वी रीच अ गुड कॉलेज, हमने उनमें से मोस्ट ऑफ द गुड हैबिट्स को लूज कर दिया है। The purpose of setting goals is to win the game, whereas the purpose of setting up processes is to keep playing the game. True long-term thinking is goal-less thinking, and it's a cycle of endless refinement and continuous improvements. Finally, let's come to the most important point: how to actually make good habits and how to break bad ones. Habits are dependent upon 4 key factors. First one being cue, second one craving, third response, and fourth the reward. Let us explain what all these means. नंबर 1, क्यू। अब ये फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी हैबिट को प्रैक्टिस करने के लिए। ये बेसिकली तुम्हारे दिमाग के लिए एक ट्रिगर होता है जो कि तुम्हें एक्शन लेने के लिए बोलता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम सुबह उठते हो और तुम अपने सामने अपने फ़ोन को देखते हो, इससे तुम्हारा दिमाग तुम्हारे फ़ोन को यूज़ करने के बारे में सोचता है। Now, craving is the second step. Craving is the sort of motivational force that pulls us to do a certain task. Unless and until we have no craving, we don't really act. At the end of the day, we are lazy engineering students. And in our case, once we see our phone, the instantaneous thought that runs in our mind is, I have been sleeping since 8 hours and I have to know everything that has happened while I was sleeping. And this is the craving that pushes us to scroll through Instagram once we wake up every single day. नंबर 3, रिस्पॉन्स। ये बेसिकली एक्शन होता है जो कि तुम ले रहे होते हो, और इस केस में वो व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करना है। The last step is reward. It's ultimately what we get after doing our habit. In this case, we get an instant high shot of dopamine after scrolling through Instagram, which is really addictive. एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने इन स्टेप्स की मदद से अपने फ़ोन को सुबह उठते ही चेक करने का एक हैबिट बना लिया है। And if you are also frustrated by this habit of looping in distractive games and social media apps, then you can check our video on digital minimalism. और अब हमारे सामने ये क्वेश्चन है कि हम इन चीज़ों को कैसे स्मॉल स्टेप्स में अप्लाई कर सकते हैं ताकि जो अच्छी आदतें हैं हम उन्हें डेवलप कर पाएँ और जो बैड हैबिट्स है उन्हें हम धीरे धीरे ब्रेक कर पाएँ। Now here comes the 4 laws of behavior change. Those are the key to break or make any habit. The first law being, make it obvious. Now this law touches mostly the cue side of the habit building process, and this broadly means that you should keep the cues of the good habit really exposed to yourself, and you should hide the cue of the bad habits that you want to leave. Now the first and foremost step is design your environment in support of habit building process. What do I mean by this? For example, you need to keep your book on the place that you really want to read the book. You should put the guitar beside your study table so that the only procrastination that you do, unless you're not working, is plugging some strings on the guitar. In this way, the probability of practicing that habit is really high. You can use any sort of habit tracker app to keep track of your progress of actions. This is a very straightforward indicator of how your process of habit building is going. You can use any of the app that's listed in the description below. Generally, the core reason of why we procrastinate is some sort of resistance. And if you plan the task that you really want to do in great detail, then the probability of procrastination is really low. For example, I will read the book Hooked from 10 p.m. to 11 p.m. on the sofa. Basically, this means that I will, the habit, at the time, in the location. Now this template is really helpful to plan out your habits to make it very precise so that you don't end up procrastinating and the process goes in the flow. Use habit stacking method. This simply means stack up the new habits over the pre-existing ones. For example, once I code in the morning, I will study maths. So basically what I'm trying to say is, after current habit, I will new habit. Now this template is also very useful for stacking up new habits. And for breaking the bad ones, simply reduce the exposure to the cues of the bad habits. For example, keep your phone away from 10 p.m. in the night when you want to go to sleep till say 10 a.m. the next morning in some place that you really not access it. For example, don't put your phone beside your bed, rather keep your phone in some location where you generally don't go very often. This will cut the habit in its very first stage, and if you don't see the phone, the probability that you are scrolling Instagram in the first half of the day is very low. Second law, make it attractive.
अब ये लॉ बेसिकली क्रेविंग वाले पार्ट को टच करता है। जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव तुम्हारा क्रेविंग होगा उतना ज़्यादा तुम उसके तरफ ड्रिवन फील करोगे, और जितना लेस अट्रैक्टिव तुम्हारा क्रेविंग होगा उतना ज़्यादा उस हैबिट को बिल्डअप करना मुश्किल होगा। फॉर एग्जांपल तुम्हारे कॉलेज के जो लेक्चर नोट्स होते हैं या फिर जो पीडीएफ्स होते हैं वो बिल्कुल बोरिंग होते हैं। इवन यूडेमी के कुछ कोर्सेज को छोड़ के, उनमें से कुछ कोर्सेज का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वैसे कुछ कोर्सेज को छोड़ करके मोस्टली जो है वो बहुत ज़्यादा बोरिंग होते हैं। बट ऑन द अदर हैंड इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव क्रेविंग है, तो तुम उसके तरफ ड्रिवन फील करते हो। सो मेकिंग गुड हैबिट्स अट्रैक्टिव इज द की। अब इसके लिए तुम टेम्पटेशन बंडलिंग नाम के टेक्निक को यूज़ कर सकते हो। बेसिकली जो चीज़ तुम्हें करना पसंद है और जो चीज़ तुम करना चाहते हो, किसी तरह इन दोनों को लिंक कर दो। फॉर एग्जाम्पल अपने ऑनलाइन कोडिंग कोर्स के एक सेक्शन को कंप्लीट करने के बाद तुम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना स्टार्ट कर दो। अब एक ऐसे ग्रुप को ज्वाइन करना भी हेल्पफुल हो सकता है जहाँ पे तुम्हारा बिहेवियर एक नॉर्मल बिहेवियर हो। अब अगर तुम्हें प्रोडक्टिविटी जैसी चीज़ों के बारे में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट है, तुम हमारे अकाउंटेबिलिटी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अनदर हेल्पफुल थिंग वुड बी क्रिएटिंग अ मोटिवेशनल रिचुअल। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर एक काम करने से पहले तुम एक मोटिवेशनल वीडियो देखने लग जाओ। इसका बेसिकली मतलब ये है कि एक बोरिंग से हैबिट को करने से पहले तुम एक ऐसी चीज़ परफॉर्म करो जिससे तुमको एक डोपामिन हिट मिले। फॉर एग्जांपल मेरे लिए अपना फ्लटर ऐप डेवलपमेंट का कोर्स देखना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, उससे मुझे मेरा डोपामिन हिट मिलता है। तो इस चीज़ को करने के बाद मैं अपने कॉलेज की पढ़ाई को भी कंटिन्यू कर पाता हूँ, क्योंकि मुझे एक डोपामिन हिट मिल चुका होता है उस टाइम तक। The third law says make it easy. Now this generally targets to the response side of the thing. Now broadly speaking, this law tells all about making the habit easy to practice. Now because friction is a really powerful force between you and your habit, and the more the friction is, the lesser the probability of you doing the task. So this law is all about decreasing the steps between you and your good habit. For example, writing the script for this entire video is a really tedious job, because planning out every scene and writing it down, it's total 2,500 words this 18-minute video or something like that. We have set up Notion templates for every video so that the process becomes really easy. For example, all of our videos are in the same format. First we analyze the problem, then we discuss the value proposition, then we discuss the practical solutions, then we discuss the conclusion. These templates make our life easy, so by investing a really reasonable amount of time, we come up with new videos every 4th day. So if you enjoy such videos, then subscribe our channel and like this video. Invest in things that make the process easier, simple and more refined, so that the entire working experience is good and we just feel like doing it. Because we are not at all hesitant to pay lakhs of rupees for this shitty PDFs and bad quality videos, but we are unwilling to invest even a very minute fraction of it into apps and subscriptions that can change our lives. And using the same law in case of bad habit, the more the friction between you and the bad habit, the better it is. So just increase the steps between you and the queue of your bad habit. फोर्थ लॉ, मेक इट सेटिस्फाइंग। अब जैसे ही दिन में तुम अपने हैबिट को कंप्लीट करो, तुम अपने आप को रिवॉर्ड करना मत भूलना, क्योंकि रिमेंबर दिस रूल, हैबिट्स दैट आर रिवॉर्डेड आर रिपीटेड कंटिन्यूअसली एंड द वंस व्हिच आर पनिश्ड आर स्टॉप्ड ऑटोमेटिकली। यू कैन यूज अ हैबिट ट्रैकर। याद रखना कि तुम अपने स्ट्रीक को तोड़ो नहीं, और इवन अगर किसी दिन तुमने उसे ब्रेक कर दिया तो नेक्स्ट डे रिबाउंड करने का डिसिप्लिन रखना। ऑल्सो यू कैन गेट एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, या फिर तुम किसी को अपने हैबिट को ऑब्जर्व करने के लिए बोल सकते हो। और अगर तुम्हारा मन हो और तुम इंटरेस्टेड हो तो तुम हमारे अकाउंटेबिलिटी ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम अपने डेली रूटीन्स और डेली हैबिट्स शेयर करते हैं। नाउ फॉर योर बैड हैबिट्स, तुम उसे पेनफुल बनाओ और पब्लिक के सामने शो करना स्टार्ट कर दो, जो कि तुम्हें फोर्स करेगा कि तुम उन हैबिट्स को छोड़ दो। So to conclude everything, good habits should be obvious, attractive, easy and satisfying, whereas bad habits should be invisible, ugly, hard and unsatisfying. We are not pros in all the topic that we speak, and we are no special. We are just two engineering students, and we deeply felt this problem with our own self of practicing and sticking with good habits, especially in this extensive lockdown period, this extending endlessly. तो इस टॉपिक पे हमने बहुत सारे बुक्स और ऑडियो बुक्स को पढ़ा और उनके अंदर से इन्फॉर्मेशन निकाला, और उसके बाद जब हमें इतने सारे पॉइंट्स मिल गए तो हमने सोचा कि इन पॉइंट्स को तुम्हारे साथ एक वीडियो के थ्रू शेयर किया जाए। Remember, a beginner is always a better teacher than a champion, because we know what problem you are facing, because we are facing them too. सो अगर तुम्हें हमारा वे ऑफ प्रेजेंटेशन अच्छा लगता है तो तुम इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और चाहो तो तुम इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर कर सकते हो, ताकि हम ये जो लर्निंग का प्रोसेस है उसे बनाए रखें। So thank you for watching till the end. If you have watched till this point, then do drop down a relieved face emoji in the comment box. This will just make our day.